This conference will now be recorded. बहुत बड़ा sector is the informal sector of employment, and then they will include the SMEs. Our SMEs are producing a lot of things, and SMEs employment will continue to the extent that their products are in demand in market. Then there are small shopkeepers and markets and all. Then there are self-employed people. So we don't see a major industrial shock coming in form of where the GDP contribution is substantive coming from industrial sector. Our industrial sector is a little limited, and so is our services sector to GDP. Now, how will we be impacted? Our SMEs and industrial sector, if we see, they are looking for two markets. One is the domestic market, which is there, which will continue, and the other is the export market. Now, our exports are predominantly, if you look into the data, go to the State Bank report, and I did some analysis. So most of the exports are dependent on either cotton or cotton-related industries. So whatever garments and things we are manufacturing is a derivative of agriculture, the cotton based. Tragedy is that our exports are mostly in America and European market. And these are the two markets which are about 60-70% of our exports, both finished product as well as intermediary product. I have a feeling that in the next 2 years, 1 or 2 years, there will be a lot of cancellation of orders from this sector. And we will not see expansion. We may see some kind of retraction in the market in the exports. And that gives us an opportunity, our entrepreneurs, to look at new markets, new opportunities, come up with more creative products, and there will be we will have to be creative to survive. So sustainability, basically, in our sustainability. So there are two key factors for sustainability. Our revenue. Revenue has to be maintained and grown. Now, maintaining revenue is going to be a challenge because we will be losing some market. And our solution, we need to explore new market. We need to come up with more products, different segment of market, because the consumer-oriented segment will not be actually doing a lot. So, we need to come up with creative solutions to uh, uh, grow market segment within Pakistan, in the region, maybe other markets, Africa and all. So we need to focus on that and get into that. Secondly, the biggest challenge is going to be the cost management. And cost management is mostly employee related, and there will be a challenge to contain the expenses, curtail and contain the expenses. So I think, like many other countries, the employees have started. Employers have, unfortunately, a lot of downsizing has taken place in other countries. We will have to learn to live with that, and at the same time, employers will have to come up with a formula where they don't make loss on salary. The people who are being paid create value to the extent that it can keep it afloat. So the profitability has to be maintained by growing revenue and containing expense. And lastly, I think the opportunity for the people who may not find jobs anymore, they are qualified, talented people, there is a huge opportunity in terms of freelancing and open online marketing, online business, online services, content writing, book writing. I mean, people go and explore, and anybody and everybody who has a smartphone or a computer and has the ability to link with the YouTube and any other marketing tool, digital marketing, has the ability to provide service if some simple basic services can be provided. And freelancing is going to be a great opportunity. So I think, so far as market sustainability continuity is concerned, we will have to rethink. We are getting into a totally different world. There will be issues, and some of our panelists will also talk about it more specifically, perhaps. I mean, tourism. I think Pakistan will have a great opportunity for building tourism, because international tourism is dead. But Pakistan, there are most unexplored areas of tourism, most unexplored opportunities, and cheaper travel, cheaper holiday solutions will be a possibility. People who used to routinely go to Europe may find more attractive propositions here. So creativity will be important. I think with this we would like to just
set the ball rolling. And let's say, Mustafa, you can then now take to any other panelist. Okay, so first of all, I request each one of you to please introduce yourself and also a bit of your background, and then also share with us how are you managing the current situation in your organization. So my first question will go to Mr. Shoaib Ahmed, who is the Chief HR Officer of CCL Pharmaceutical. Thank you, Ghulam Usman, and thank you, Zafarji Usmani Sahib, for such a detailed introduction, setting the scene that हम किस चीज पे बात कर रहे होंगे. I'm Chief HR Officer with CCL Pharmaceutical since last 3 years. I have worked for 13 years with Unilever Pakistan, and then I worked with Tetra Pak, and my last assignment was as General Manager HR for Agro Foods. Yes, pharma industry, as you all know, is exempted from the lockdown. So that's a big challenge for us. And we are a 52 years old company. We're providing all our medicine across the country and exporting to 15 other countries. So that export, initially it was announced that every type of export for medicine will be stopped, but now it has resumed because it's going to be a big challenge for us to continue our business in the international markets. But when we come to Pakistan, if I see जो बड़े challenge हैं, the first of all is the communication channel. Right? How are messages coming from the CHRO office and the CEO office? How we are talking to employees? Our employees are spread across Pakistan. Field operations has been stopped. People were not allowed to go to visit doctors, hospitals, and medical stores. So उनको हम किस तरह engage रखें, उसको किस तरह हम अपने साथ रखें और उनको ये एहसास दिलाएं कि ऑर्गेनाइजेशन इज विद देम. तो हमने सबसे पहला स्टेप जब जैसे ही शुरू किया, हमने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अलाउ किया कि वो खुद जो मास्क, सैनिटाइजर और हाइजीन की जितनी चीजें उन्हें चाहिए वो खरीदें. कंपनी उसकी सारी कॉस्ट उनको रीइंबर्स कर देगी. प्लांट ऑपरेशंस के ऊपर हमने गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशंस थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, हमें अपने ट्रांसपोर्ट डबल ट्रिपल करनी पड़ी क्योंकि अब एक सीट छोड़ के दूसरी सीट पे बिठाना है. हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर हमें स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़े, वो एयर ब्लोअर्स हों, वो टेम्परेचर गेजेस से चेक करना हो, वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि लोगों को हल्का फुल्का टेम्परेचर और खांसी रहती है और इस सिचुएशन में वो खासा पैनिक फैला देती थी. तो हमने उसको मैनेज किया. सो आई थिंक इस टाइम में, और फिर स्पेशली लाहौर और उसमें देखें तो एम्प्लॉइज जब बाहर मूव करते हैं किसी ना किसी चौक और नाके के ऊपर, पुलिस उनको रोक के उसको आइडेंटिफिकेशन और उस प्रोसेस से गुजरती है. सो हमने उस पूरे प्रोसेस को मैनेज किया. अपने एम्प्लॉइज के साथ तमाम कॉन्टेक्ट लाइंस शेयर की. पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन रखा जहां जहां हमें रिवाइज रूट परमिट्स चाहिए थे या नई गाड़ियां चाहिए थी. सो आई थिंक बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में गोइंग फॉरवर्ड हमने इसको एसी और बीसी में कन्वर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया. लाइक जैसे आप हिस्ट्री में आफ्टर क्राइस्ट एंड बिफोर क्राइस्ट देखते हैं, वी आर सीइंग इट एज एन आफ्टर कोरोना एंड बिफोर कोरोना. सो आफ्टर कोरोना आवर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट. सो what are going to be our different hiring models. हम इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम was just about to start. हमने 23 मार्च को स्टार्ट करना था और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया. So we immediately went online. हमने अपनी इनिशियल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग लम्स के साथ, एलएससी के साथ, एफसी कॉलेज के साथ, इन सब के साथ मिलके हमने उनके ऑनलाइन टेस्ट लिए. क्विकली हमने वो टेस्ट क्रिएट किए. अदरवाइज हम यूनिवर्सिटीज में जाते, वहां जाके हम उनको हॉल में इकट्ठा करते और वो सारा कुछ जैसे एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. तो वो इमीडिएटली स्विच देयर. और अब हम माशाल्लाह अपने 4 इंस्टीट्यूट्स के साथ ये ड्राइव कर चुके हैं और रिमेनिंग 4 के साथ करनी है, और हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं रोकना चाह रहे. सिमिलरली जो हमारा इनके साथ है, इंडस्ट्री के साथ हमारा कोऑपरेशन, उसमें हमारी जो पीपीएमए है,
वो किस तरह अपने आप को डिफरेंट फोरम्स के ऊपर कर रही है। हम क्योंकि रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं, हमें अपने रेगुलेशंस की कंप्लायंस की बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, उनको हमने रिपोर्ट करना है। वी इनिशियली स्टार्टेड कि हम अपना सैनिटाइजर जो है वो खुद लॉन्च करें, एंड वी हैव इंशाल्लाह इस वीक में हम उसको भी लॉन्च कर रहे होंगे। लेकिन लैब स्केल पे हम सब कुछ इंटरनल बना के अपने एम्प्लॉय और प्लांट की यूजेज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट न्यू नॉर्म, जिसको न्यू नॉर्मल कहते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर। एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिविटी भी मेंटेन कर रहे हैं। लोगों को जिनको वर्क फ्रॉम होम है उनके साथ कनेक्टिविटी है, जो प्लांट पे आ रहे हैं उनके साथ एंगेजमेंट हमने रखी हुई है। जो फील्ड में लोग, अब हमने उनको रिस्ट्रिक्टिवली अलाउ करना शुरू कर दिया है कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी उन चीजों को विजिट करें। सो आई थिंक दिस एम्प्लॉय एंगेजमेंट through all these different media and different initiatives, it is going to be very important. तो होपफुली इंशाल्लाह ये अच्छा वक्त और जल्दी आएगा और हम इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू शुएब साहब, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट्स ऐड किए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही है। अभी सेकंड राउंड में हम किसी और क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा ताहिर मलिक साहब से। ही इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ ग्लोरिया जीन्स। That is entirely a different business as compared to the CCL Pharmaceutical. So, what sort of challenges you have in your organization? And considering your Pakistan and overseas experience, because you have also been working in Australia and then you moved to Pakistan, what sort of suggestions you have for entrepreneurs and also for other people? कि वो कैसे जो है अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी को अप एंड रनिंग रख सकते हैं और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ओवर टू यू थाहिर सर। थैंक यू मुस्तफा, थैंक यू फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और बता दूं। बेसिकली माय बैकग्राउंड इज HR एंड आई हैव गॉट about 35 years of HR background, overseas, local, and multinational companies, large companies. I've been working as a group head HR, Descon, NetSol, and then I've been running my own business as well, so managing my own business. So this is not the first time that we are experiencing such a situation. इस वक्त आई एम attached with an hospitality industry, लेकिन having said that, since I have got the experience of all the industries including IT, hospitality, construction, and again back to a hospitality industry, I have seen the number of challenges that we have faced in the past. One of the big challenges that I faced similar to that, but it was although sort of a worldwide scenario था, जैसे कि जफर उस्मानी साहब ने कहा है, but it never happened like this. It is गालिबन हिस्ट्री में पहली दफा ये सुन रहा हूँ कि ये all over the world there is a crisis. Last जो experience था वो that was .com crash और उसके बाद IT industry collapse, and similar situation evolved over there as well. वहाँ पे हमने किस तरह हैंडल किया, that is quite interesting to know, because IT में जिस वक्त collapse हुआ, the management started to think on laying off people, voluntary redundancies and things like that. वहाँ पे what I would like to say है कि जो HR head का role होता है, that is very important. क्योंकि HR जो have that creates a balance between the management and the employees, because इस situation में employees को on board लेना बहुत जरूरी होता है। Last में experience थोड़ा सा share करूँ कि last experience में मैंने फिर I had to take the employees on board. First of all, we asked for voluntary redundancies. There were very few voluntary redundancies. Then we said, okay, we are going to lay people off. जब वहां पे बात आई तो that was where I had to take all the employees on board, and the employees started requesting, please don't lay us off, either reduce our salaries or we are even willing to work without salaries for the period where things start going better. And I tell you very honestly that I'm sharing my experience with you. Those people who voluntarily asked either to reduce the salaries or to
keep them without even being paid. I think the whole period was about 6 months. Those people are the ones who are on top management of that particular organization. Coming back to my current organization, yes, being looking after the hospitality, I'm working for Glory Jeans, which is an Australian organization, and we are at the moment managing about 60 of their outlets throughout Pakistan. It is quite a big challenge for us what to do, because hospitality industry has been affected very adversely. जैसे शेर साहब ने कहा फार्मा में नहीं इतना affect हुआ, लेकिन there are a number of industries, as Zafar Usmani Sahab said, there are a number of industries where there are really threats that I don't know whether they will be able to reopen or not. Every franchisee of ours is saying, do we have to lay our people off? We cannot afford to run the business without laying them off. So my suggestion to them is, no, first of all, re-strategize, अपनी business strategies को पहले define करें, उन्हें देखें कि what are your strategies going to be once things, especially जो है ये lockdown period खत्म होता है, तो उसके बाद एकदम जो है वो things going to be totally different. जैसे जफर साहब ने कहा और शुएब साहब ने भी ये बात कही कि it's going to be a totally different world, and for that different world, are we prepared? Our young generation, we have Usmani साहब हो गए, मैं हो गया, मुजीब साहब हो गए, शुएब साहब हो गए. We have been through such things in our lifetime, one way or the other. But at the same time, if you are saying कि जी अब जो नई जनरेशन आ रही है, उन्होंने गालिबन first time in their life इस किस्म की चीज देखी है. How they are coping with it, how HR fraternity is coping with it, how they are managing the whatever I say gap between the management and the employees. उनको किस तरह हैंडल करना है, this is something that we would really like to suggest our younger generation कि आप अपने अपने रोल में don't think negatively, just think positively. Yes, things are going to be different. Yes, there might be layoffs or even I would say salary reductions, but how to handle these things, this will be the role of the management. This will be the role of the people who are managing the organization. So in brief, I would really say we need to be positive. We need to have strategies. We need to think if we are in a HR role, should we be advising the top management? Because as I said, HR people are the balance between the top management and the employees. So it's a very important role. So that's all for the time being I would like to say, and I'll carry on with the rest of the discussion. Over to you, Mustafa. Okay, thank you very much, Tahir साहब. आपने अपने experience के basis पर different strategies और different aspects को discuss किया. We will discuss about it later. Now I move to Mujib Qayyum sir, who is the chairman and MD of Virozi Central Asia region, to discuss and share with us his views about the current situation and how organizations should operate in this current situation in terms of sustainability and growth. Thank you, Ghulam Mustafa. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, my colleague panelists. You guys have touched this critical topic and started the discussion. This is great. Let me give you my quick background quickly. I am associated with the IT industry. It's over 30 years. I have been working, starting from Pakistan, of course, across the globe. I've been working in North America, also in Middle East. Recent past, before starting my own software company, own business, I was working as a senior vice president in Nexel Technologies. That's the time when me and Tahir Malik were colleagues. He was heading the HR, and I was heading the IT consulting and services division. Of course, in past experiences, we've been through different type of crises. When 9/11 happened, I was in US, and I was, of course, an employee of that, and as an employee or as a worker, the preparation of that kind of environment as a continuity was more focused on my personal objectives and personal goals, that how I'm going to continue in this environment.
Of course, I was not responsible for the colleagues, for the teams, or the company, but I was responsible for me and my family. So that was one aspect at that time. Then there was a 2008, 2009 crisis. Then I was in a senior position representing the executive committee of the company, and I was, of course, uh, in addition to my personal, well-beings in this crisis situation, I was also concerned about the team I was responsible for as their head of IT, and that reaction or that action was different. Of course, I had a support from the executive committee of Finance and Technologies at that time. So, but now the situation is different. This situation is something I would say what we have been through in the past is not even close to that. Whether it's a 9/11 or a 2008, 2009 recession or anything, this is not only just impacting the business or the economy of the world, but it's also going to impact the culture of the people of the world. That how they are going to work, and not only that, how they are going to behave, how they are going to, interact with each other. What we have done in our company, because of the IT setup, we already provide our software service on cloud. So having that setup, we're lucky that we have everybody has a laptop, everybody has internet, work from home facility already. So when we saw even before the government had locked down, I was talking to, of course, my counterparts and the senior management in US office also. So they, and American style is different, that they they prepare things upfront, and I'm lucky that part of their team. We have started working on making sure that how are we going to continue provide our customers the support uninterrupted. So we made sure that all our employees are enabled with the equipments necessary, with the internet connections necessary, and have been tracked, managed, and controlled while they're working from home. And before even the lockdown started on 23rd, we've started work from home from 18th of March, with all the bells and whistles set, with all the rules and regulations, that how the team's going to interact, how the team's going to work together, and it's been 3 weeks. That's what we are doing. Okay, everybody's fine, everybody's performing, everybody's delivering, but that's an easy environment. That's an easy business side. If you look at, especially when you're in IT and when you're dealing with the North American or the European companies, where you don't need to meet people, you don't need to touch people. You can simply sit on your computer, laptop, connect your machine, and start working on it. But when it comes to the other industries, that definitely things goes a bit different mode, and then companies have to plan and decide. So at here, I'm going to stop myself because this is my introduction and my company's preparation. When we come to talking about how other industries are going to react, then we'll talk more about it. I'm going to pass it back to you so that we can go on to the next question. सर इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल जो सिचुएशन है मैं थोड़ा सा रैप अप करता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशंस को फेस हो रही है और जो लोगों को फेस हो रही है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क फ्रॉम होम we have to socialize from home, we have to eat from home, we have to even pray at home, and also we have to learn from home. So everything has changed now. The whole scenario is changed. We cannot go out, we cannot shake hand, we cannot hug, we cannot let's say kiss, and all these scenarios are different now. And because of all these things, there is a serious change in the management behavior of some organizations. शोएब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में CSR इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ, उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉइज को मैक्सिमम सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है. बट जफर साहब, बिकॉज आपका चूंकि ज्यादा इंटरेक्शन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, so what are your views about it? How this is affecting the life of people? Yes, the new normal is now working from home, social distancing, and also the physical distancing. This is the new normal, and many organizations have realized
that they were not prepared for such kind of things, or they didn't invest in technology. Like मुजीब साहब ने बताया कि उनकी organization को काम के लिहाज से कोई effect नहीं है, because they have all their work is on technology, on computers or laptops. They just move from one place to other place and they are up and running. But mostly organizations are not like this, especially the organizations who are in restaurant business, in travel business, in sales and production business. They do not have anything. लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन की जो आ रहा है कि लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, उनको अनपेड लीव्स के ऊपर भेजा जा रहा है. This situation happened in started happening in Pakistan like from 1st of March, or you can say जो रियल इम्पैक्ट आया ना वो 15th मार्च से आया, जब ऑर्गेनाइजेशंस को कहा गया कि वो अपने एम्प्लॉइज को यानी कि दे शुड आस्क देयर एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम या लॉकडाउन की सिचुएशन. तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस के पास 1-2 महीने की सैलरी भी नहीं थी? क्या उनके पास इतने भी फंड्स नहीं थे कि वो इतना इसको मैनेज करते थे, इतना एब्रप्ट या इतना वो क्या उन्होंने फॉरन रिएक्शन शो किया कि लोगों को फॉरन अनपेड कर दिया? मतलब इवन के स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी जो होती है ना, हम घर में भी हमने इतनी सेविंग्स तो हमने रखी होती है अपनी पॉकेट में. तो आपका जो कि इंटरेक्शन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर आपके एक तो पर्सनल व्यूज क्या है, और एक जो ऑर्गेनाइजेशनल जो हमने एज ए कंसल्टेंट हमने कहना होता है वो क्या है. प्लीज इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट इट. Thank you, Mustafa. Very interesting question. And this is actually the first thing that hits us. Acha, your question is very well pitched. But the thing is, we have to understand that there are segments of organization. There are some organizations which do not have cash flow problem, immediate, short-term cash flow problem. For instance, banks and financial institutions, they are not cash hurt anytime. There will be income drop and profitability drop because of a lot of things not happening, LCs not opening, borrowing not taking place. Luckily we are not in a very high consumer financing market. You know, countries like America where 50-60% of every product is based on consumer financing. So everybody has a house which is on loan, car which is on loan. We don't have that society. But so those organizations which have liquidity, which do not have liquidity issue, they will be able to manage the salaries in the short run. But there are a lot of organizations, business organizations, export oriented, small manufacturers who actually work on borrowed money. So their cash flow, if you see, it is on the sales, and then the sales revenue that comes in, it goes towards meeting expenses, partly paying back the loan and all. And why do they all take loan? Because if you want to grow your business, you need to have you leverage your capital by borrowing and getting more investment into the plant, machinery, and sales. So that segment is going to be hurt, and it will be hurt very badly because their one side their revenue is choked, and the other side is that the expenses are going. And some of us here will you see government also taking some steps. For instance, your electricity bill may be reduced, but it will still be there. Our the domestic servants that we pay, we have to pay. Our food and grocery will have to continue, whether salaries coming or not coming. But then there are, the government is also suggesting banks to provide some soft thing, electric companies to reduce their collection ratio. Credit card payments have also been eased. This is to provide employees the facility of managing with a limited or short cash flow. But most companies, I take you one example. It's 8 o'clock. Let's say we talk about the schools, for instance, the people who are doing business of school education. Their survival is based on the fees that come from parents. Now, parents, if they don't get cash salary, they will not be able to pay the fee. So therefore, they'll have a problem in paying back to the employees, to the teacher. And a lot of organizations, downsizing has already started because companies don't have money to pay, and then they have to go and borrow from banks. So it's going to be a little complex situation for medium size and small size organizations. I mean, for companies like we have a small consulting company. I'm not thinking of any salary cut, or I'm not thinking of stopping salary because this is a small period. This will go, but some point in time
If my business stops, if my cash flow stops, then there will be question. My training programs, for instance, we conduct a lot of training programs. We conduct a lot of on-site training programs, facilitation, leadership training, and all that. Now it looks like that two things can happen. A, those on-site training people will not, because if they have to cut budget, the first budget cut comes on employee-related expenses, and training is considered a superfluous expense, which can be managed without. So my training side I see is going to be reduced. Our hope is that we will be able to offer some online training programs and online solutions to the companies. And in fact, some of the companies have approached me to conduct an in-house program just like this through the technology. So if that continues and if we build on that using the benefit of all the technology capabilities, so that will continue. But there is definitely going to be a reduction in the cash flow. It's not the world, pre-March world, that we are going back. There is no hustle bustle like that. लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, take it from me, my experience in life. 6 months from now, inshallah, it will be back to the same kind of lifestyle. So you will see malls will be full. You will see people will be going out. पैसे कम होंगे, still there will be activity. So ये जो mind है ना हमारा, इसमें अल्लाह ने एक बहुत बड़ी quality रखी है, वो है forgetfulness की. So we actually erase the days that we are passing. We have seen in the past, not to this magnitude, but there has been time of war. Some of us have seen wars, 2 wars. We have seen separation of East Pakistan. Some of us have seen it. And it has brought shocks. One fine morning, all the currency was demonetized. But the time passes on, and now nobody even knows. Nobody even remembers what happened. So the resilience is there. The people will come out of it. Like in the transition between now and that time, challenge will be to manage our sustainability. That's your topic, survival and sustainability. And this, only those companies and those organizations who will be able to manage it with creative solutions, those are the organizations that will survive. Otherwise, unfortunately, I and you may see some organizations actually closing down because they don't have revenue, they don't have a lot of cash flow. So if you're thinking that they have kept a lot of savings with them, then for which they can keep on paying for the next 6 months without money, I don't think there will be any organization who can manage to do that. But those who find alternative solutions, the real success now will be finding out alternative opportunities, which we don't think in normal life. Because जैसे अभी हम communication की बात करें, we never thought of it that why didn't we connect through Skype or something else and having these kind of seminars and everything. There was an easy way available. So every conference, okay, if I have to meet Mustafa and 3-4, we'll say, okay, come along, let's meet at my office. So somebody will travel from one spot, drive the car, somebody will come from other. So the time wastage that goes for a 1 hour. For instance, अभी हमारी 2 मीटिंग है भावलपुर में, जो कि मुझे जाकर के हम लोगों को करनी थी. But now that's also to the it's a defense DHA भावलपुर की प्रोजेक्ट है. लेकिन जब पॉसिबिलिटी थी जाने की, तो हमारी टीम के 3 लोग यहाँ से वहां जाते थे. And we will sit and we will make the presentation. चाहे वो 1 घंटे 2 घंटे की प्रेजेंटेशन हो, 2 दिन लगते थे हमारे, और ट्रेवल आना जाना and all that. Now, because of the force situation, we are having it exactly like we're talking now. So 5-6 people will sit together, we will have the presentation open, we will discuss, and I tell you, there will be very minimal compromise on the quality of the meeting. I think meeting will still be. Actually, sorry to interrupt you. मैं जो basically discuss करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक तो हमें इस जो period है, मैंने इसको एक नाम दिया है transformation from human to humanity. ये जो COVID situation है, it has allowed us to transform from human to humanity. So in this period, organizations have to show, or the people have to show that how they are showing that they are actually human. They are respecting human. They are caring people. They are taking some initiatives. So मैं question move करता हूँ next श्वेत साहब की तरफ.
इसमें मुझसे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये एकदम हुआ क्या, एकदम क्यों कंपनीज को, अगर आप इसको थोड़ा सा अब पिछले 1-1.5 साल से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप सिर्फ फरवरी का याद कर ले, अगर 1 महीना पीछे चले जाएं, 2 महीने पीछे चले जाएं, हमारा जो इंटरेस्ट रेट सबसे बड़ा इशू उस वक्त 13 to 14%, डॉलर वर्सेस पाक रुपी की जो सूरत हाल चल रही थी, हम फार्मा इंडस्ट्री 90% इंपोर्ट करते हैं, वो सारी प्राइसेस उस तरह आगे कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते, टैक्सेस बढ़े हुए हैं, फूड इन्फ्लेशन, ये सारी सिचुएशंस थी। तो ऑर्गेनाइजेशन मंथ टू मंथ चल रही थी, कंपनीज मंथ टू मंथ चल रही थी, वो अपने एक साइड से कुछ आ रहा था और उसको वो मैनेज कर रही थी। ऑल ऑफ सडन ये रुक गया। अगर आपका ख्याल ये है, यस, लेकिन शेख साहब, ये आप पाकिस्तान की हद तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, ये अमेरिका भी ले ऑफ कर रहा है, इंग्लैंड भी ले ऑफ कर रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी ले ऑफ कर रही हैं। वो ले ऑफ कर रहे हैं तो वो पूरा उनको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं ना। उनको आप देखें जो स्टिमुलस पैकेजेस आ रहे हैं, ये यहाँ गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको लॉकडाउन ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं करती? बिकॉज लीगली दे आर बाउंड टू पे के इन लोगों को। क्या अभी तक गवर्नमेंट ने ये किया है कि एम्प्लॉइज को हम जो सैलरी दे रहे हैं वो विदाउट टैक्स दे दें? वो टैक्स की वो तो उसी तरह चल रही है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो बैठी हैं, वो हमारे पास कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं था। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पे, लोग इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो उसको कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सॉरी, आप अपना सवाल कीजिएगा और औरों को भी मौका दें। जी थैंक यू। आपकी ये बात किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि प्रीवियसली हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी पुअर रही है कंट्री वाइज, और उसमें ना कोई ग्रोथ नज़र आई है और चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी, लोगों की बाइंग पावर काफ़ी स्लो थी। ऑलरेडी पाकिस्तान में ये सिचुएशन चल रही थी रिसेशन की, और ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस ले ऑफ कर रही थी, और उसके ऊपर कह लें कि ये सोने पे सुहागा ये हुआ कि ये एक सेकंड थोड़ा ये पड़ गया कोविड वाला, और उसमें लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ, आई जस्ट शेयर माय कंसर्न, मे बी आई एम रॉन्ग, कि अगर जिसने नहीं भी करना था उसने भी कहा कि चलो इसका सहारा लेते हैं और बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं और हम लोगों को ले ऑफ कर देते हैं या लीज पर भेज देते हैं। सर, व्हाट डू यू से बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस प्रीवियस टू के आपने एचआर में भी काम किया, ऑपरेशंस में भी काम किया, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल, क्या ऑर्गेनाइजेशंस ये ठीक कर रही हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना? इज इट द राइट चॉइस इन दिस सिचुएशन टू सस्टेन and keep the business up and running? Do you think this is the right decision? देखिए मुस्तफा, बिल्कुल मैं इस बात का जवाब दूंगा। while saying that हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं, and we should start looking at the questions as well because naturally time limited है और उसमें हम लोग we need to answer some of the questions that are being asked by the participants. ठीक है, क्विकली आंसरिंग योर क्वेश्चन। देखिए जी, ले ऑफ्स गालिबन नीड ऑफ द डे शायद बनता जा रहा है, इन जो नॉर्म्स बनते जा रहे हैं सारी दुनिया में। आई हैव सीन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने ले ऑफ्स और सैलरी कट्स अनाउंस कर दिए हैं, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू क्या वो ठीक हैं या गलत हैं? That is arguable. Salary cuts को भी मैनेज किया जा सकता है। Say for example, if you are asking an employee कि भाई हम आपकी सैलरी रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसको किसी तरह फैसिलिटेट भी करें। Say for example, what I have started to think is in my organization कि मेरे कुछ लोग ऐसे हैं who can probably work from home, और उनको अगर हम थोड़ा बहुत सैलरी कट का कहेंगे तो नेचुरली उनको अगर फैसिलिटेट करते हैं कि जी आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आए, एंड दैट विल सेव योर ट्रेवल कॉस्ट। अगेन शेर साहब ने जो बात की, गवर्नमेंट को भी इसे थोड़ा सा कहीं इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा बाय गिविंग सम टैक्स बेनिफिट्स, कि भाई अच्छा टैक्स जो है रेट है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, जिसका बोझ अल्टीमेटली जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर कम होगा, और एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा सैलरी रिडक्शन वाली साइड पे सोच सकेगा कि अच्छा सैलरी रिड्यूस हुई है तो चले सैलरी अगर हम कट भी कर दिए तो इतना एम्प्लॉय को फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त मैं अगर कहूँ कि मैं अपनी कंपनी में सोच रहा हूँ 20% टैक्स कट,
सॉरी सैलरी कार्ड, तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द एम्प्लॉइज, जो उनके लिए बेयर करना मुश्किल हो जाएगा in the current scenario. But having said that, at the same time, there is no choice. अगर या तो हमें टैक्स सैलरी कट करने पड़ेंगे या उनको कोई और तरीका हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे ये है कि लोग जो हैं उन पे बर्डन कम है। बिकॉज आपका जो क्वेश्चन था कि जी ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। इफ ह्यूमैनिटेरियन एक हम किसी को ले ऑफ कर देते हैं तो उससे कितने लोग अफेक्ट होते हैं, उसकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये एक स्ट्रेटजी है जो हम मैनेजर्स को या सीनियर मैनेजमेंट को बनानी है कि हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। So having said that, I hope I have answered the question. लेकिन again, I'm saying that I think we should also start taking questions. मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा मैसेजेस भी आ रहे हैं। Please carry on. जी थैंक यू ताहिर साहब। दोनों फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉई साइड से भी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है और एम्प्लॉयर साइड से भी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, और कुछ हमें अपने वेज ऑफ लिविंग को भी चेंज करने की ज़रूरत है। आई मीन एट दिस टाइम वी नीड टू कट आवर एक्सपेंसेस एट आवर मे बी आई मीन आवर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, और हमारे जो कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा अपने एक्सपेंसेस स्टार्ट किए हुए थे उनको मे बी वी नीड टू कट देम एंड वी नीड टू रिड्यूस आवर ओवरऑल मंथली एक्सपेंसेस। बट अगर हम बात करें कि जो बिजनेस को सस्टेन करने के लिए जो मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया है। somebody asked के please talk about difference or impact of employees or management tendency towards usage of IT in different sectors before and after corona. So will companies or should the companies have same tendency towards using IT as they are doing nowadays, or it will be minimized? ये मैं मुजीब साहब को क्वेश्चन थ्रो करूंगा बिकॉज ही इज एन आईटी एक्सपर्ट एंड आल्सो रनिंग एन आईटी कंपनी। तो व्हाट डू दे से अबाउट इट? ऑल्सो मैं एक चीज यहाँ पर ऐड कर दूं कि एक बिलाल अयूब साहब ने शेयर किया है कि एसएमईज को लॉस बियर करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 100 बिलियन पीकेआर, जिसमें जो एसएमईज इंडस्ट्रीज को इस सिचुएशन में वो सपोर्ट करेंगे अपने लॉस को बियर करने के लिए, और ऑल्सो वो अपने एम्प्लॉयज को ये अप एंड रनिंग रखें विदाउट टर्मिनेटिंग देयर जॉब। वो ये गवर्नमेंट से एसएमई समीडा से ये लोग सपोर्ट और हेल्प ले सकते हैं। बिकॉज एट टाइम्स ये भी होता है कि हमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का नहीं पता होता कि कौन सी ले रही है, कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ से हम लोग हेल्प लेके हम लोग अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था पाकिस्तान एम्प्लॉयर फेडरेशन की तरफ से कि क्या गवर्नमेंट ने ये जो कहा है कि एम्प्लॉयज को सैलरीज दें या उनको टर्मिनेट ना करें, डू यू पीपल एग्री और डिसएग्री? तो ये क्वेश्चन तो पाकिस्तान एम्प्लॉयर फेडरेशन ने रेज किया, लेकिन क्या पेफ ने, पाकिस्तान एम्प्लॉयर फेडरेशन ने क्या ये गवर्नमेंट से बात की जो शुएब साहब ने कहा कि जी आप लोग एम्प्लॉयज के जो टैक्स है उसको वेव कर दें? क्या गवर्नमेंट ने ये क्या एम्प्लॉयर फेडरेशन ने ये तो बात नहीं की जो कि करने की जरूरत है आई थिंक। तो लेकिन ये मैं दोनों एस्पेक्ट से बात करूंगा, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की भी और कंटिन्यूटी की भी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम पे जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी कंटिन्यूटी की भी। तो पहली चीज तो मैंने कुछ ऐड किया और एक क्वेश्चन हम वापस भेजते हैं मुजीब साहब की तरफ। मुजीब साहब, व्हाट डू यू से अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी इन द करंट सिचुएशन एंड पोस्ट कोविड सिचुएशन? विल इट इंक्रीज और it will reduce or it will stay in the same way? Thank you, Ramswa. I think we've talked and touched different angles and different aspects of this issue. Whether, like I said in my first introduction, that there are two aspects of anybody. Before I come to your answer, there are two aspects of everybody impact-wise. One is the personal, and the other one is the business. If somebody is running an enterprise, their aspects are different and their responsibilities are different, and then he or she has to behave a different way to handle and manage that situation. If somebody is an employee, whatever industry it is, then his responsibilities are different. So he has to see the survival of his or him or herself as well as the family.
तो उसमें जो पहली बात थी कि ये तो hibernate करने वाली बात है under the circumstances that whatever the resources you have, control and hold your resources and see that when this wave or this storm is over, then you come back and then you start looking into re-energizing yourself and going back to the industry to get more opportunities. That's one advice I would say कि जो भी अगर हम बात करें पोस्ट कोविड सिचुएशन की, बहुत सी चीजें जो हम प्री कोविड सिचुएशन में करते थे वो प्रॉब्ली हमें कट डाउन करनी पड़ेंगी पर्सनली एज वेल एज बिजनेस वाइज. बिजनेस एसेंशियल्स पे जाना पड़ेगा, पर्सनल एसेंशियल्स पे आना पड़ेगा. This is not a rocket science which I'm telling, of course everybody know that, but sometimes people don't think that way. That you have to budget yourself, you have to plan yourself कि अच्छा 2 महीने रहता है, 3 महीने रहता है, and after that when the business comes back, तो things जैसे जफर साहब ने माशाल्लाह बड़ी optimistically कहा कि things will be back and human has a tendency of forgetting. अगर अल्लाह ताला भूलने की सलाहियत ना देता तो इंसान पास्ट में फंसा रहता. So that's a good point, and this is going to happen. Like we forgot to 9/11, we forgot 2008-9 and so on and so forth. तो इसी तरह जिंदगी में इंसान अपनी बाकी चीजें भी भूल जाता है. So we need to personally first of all assess ourselves and see that okay where we are standing and how we manage that. I know some people will have a tendency to plan, some people may not have it. That's where the government comes in. अब government के हवाले से we were talking about that the government is doing XYZ activities and they are not doing XYZ activity. In either case, we cannot force things. We have to just look and see that we are if things will turn out to be positive from the government side or from the enterprise side. Enterprise had their own limitations, of course. Their budgets, their revenues are going to cut down. Some businesses like Shahzad Sahab said that they were in the beginning started feeling the heat, that it's going to be reducing their revenue, so they have started doing the pay cuts or starting laying off the people or sending people home without salary. Well, they have to manage their end for that perspective until the things will come back. If that era continue or the post COVID era continue, even then the world is going to change. Of course, the social distancing, and that's where the technology comes in. So that's where the question was, that how technology. What I see moving forward, technology will become, other bloodline for every business, even if they are not now. Many businesses, of course, retail stores, they will get into e-commerce model. Manufacturing industry will go into, hindsight, it's going to lose people job, but they're going to go into automated production units as much as they can, or minimum man force. So these are the impacts going to come. And one thing I would say that we all should be ready, whatever the industry we are. Every industry has their own impacts and implications. At a moment, the most hit industry is travel, tourism industry, and manufacturing industry. Of course, the service industry still, to some extent, like the pharma or any other, still they are working partly from home and partly they are, going out also. People are doing some of the work. Consumer industry is still there. You can go and see, do all your grocery and everything is there. So that means there's a supply chain of that. So the impact is there. Impact is going to come, and technology will play the role in any case. So we and also I was looking at one of the questions somebody was asking about the education perspective. Pakistan is not very advanced in technology, but I can see that even an average school has started to somehow, the private schools, small online classes, small introduced things. So we need to look at the change is coming, and change. This is a change because of any reason. If it comes because of the COVID, then it has to be. But we have to see that how change would be adopted and adjusted. Everybody will have his or her own consequences subject to the environment and the place they work, or the organization they work, and they have to prepare for them for the better or worse from their perspective. But one thing we make sure that
we should be ready for the change, and that can only be done if we pre-plan ourselves, if we put our baskets at one place, eggs in one place, and distribute it properly, evenly, and look for a better time to come. There's always day after a night, so it's not that always be a night. It's going to be a day, inshallah. But we have to be prepared. We have to be ready for that. We have to be looking for good times also, and hibernate ourselves to see how we manage it. People are not very well versed on technology in many areas, in many industries. But I can see that this online meeting thing had initiated starting from this. People do online shoppings, people do online chats and video calls and communication, email, everything. So that will become the norm of any business and minimum human interaction. So there are going to be more restrictions, rules, and regulations being implemented by the governments across the globe for managing the business. So the world is going to go on, but with a different model. And what we need is we need to plan ourselves, keeping in view in our shoe that where we are and how it's going to impact us. And everybody will have a different environment and different impact. GGM, over to you. Thank you, Mujib Sab. What I learned and also understand that in future the technology use will further increase, and organizations who have not realized the advantages and benefits of IT, they are obviously facing a lot of troubles and problems during this current situation, and now they need to rethink and re-strategize towards their financial strategies towards the implementation of technology, ERP solutions, and also the other technical aspects as well. Even not only the large scale organization, the medium enterprises, and also the small scale industry, they also need to focus on utilization of IT for ensuring to ensure their business is up and running all the time, even if they are not, even if they're It working will from home or. necessary. It will become necessary for those businesses moving forward Exactly. that they have opt and adopt. That is the foundation of change, because if the change comes in, then you have to adjust yourself according to the change. Exactly. And I think that जो organizations already heavy investments की थी जिन्होंने like for example Shweb Saab, I think if he is still with us or not, Shweb Saab, are you hearing us? I'm here. I'm आप here. आपकी तस्वीर नहीं आ रही थी तो चले ठीक है. तो जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया हुआ था वो आईटी में, उनके लिए जरा सिचुएशन को हैंडल करना इजी रहा है, बिकॉज दे कुड अलाउ देयर एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का स्ट्रांग था, तो जिनका नहीं था उनको उनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. उनके पास उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. So I think we had a very good discussion because the time is running now, and we have spent alhamdulillah बड़ा quickly 1 घंटा गुजर गया. So we can open the floor now, and I can mute my mic, or if anybody has to ask a question from any panel member, you can. I'm opening mics of all the people. मैं सबको unmute कर रहा हूँ. तो लेकिन आई रिक्वेस्ट के जिसने क्वेश्चन पूछना हो वही जो है वो बोले, ताकि हम वी कैन हियर एंड वी कैन आंसर. एंड यू कैन आल्सो मेंशन नेम ऑफ द पैनल मेंबर कि मैंने इनसे क्वेश्चन पूछना है. I just want to add one thing, Mustafa. There are some brilliant questions on the chat. ऑल्टरनेटिवली So हम ये people भी कर सकते हैं. Yeah, I think if you can secure them, we can respond to them later also. यस, जो है ये भी किया जा सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है वो चैट में लिख दे, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा. जी प्लीज आप लिखें. मैं ओके अब्दुल चौहान साहब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. लेट मी फाइंड हिम.
जी चौहान साहब, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट को। बहुत अच्छा ये मुस्तफा भाई पैनल रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है इसे अटेंड करके। मेरी तमाम पैनलिस्ट से हमारे सीनियर हैं, सबसे ये सवाल है, कोई एक बंदा अच्छा सा जवाब ये दे दे कि बहुत से दोस्त हैं जिनकी कंपनीज ने 3-3 माह के लिए उन लोगों को विदाउट पे घरों को भेज दिया और वो लोग इस वक्त बड़े परेशान हैं। उन लोगों के लिए क्या मशवरा है हमारे सीनियर मेंबरान की तरफ से कि वो अपना सर्वाइवल करें? जी, who would like to answer the question? जफर साहब। जी, आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये हुआ है बहुत जगहों पे। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तो ये इतना नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट 1-2 महीनों में अगले बहुत आएगा। तो बेसिकली देखिए, अगर कोई मुलाजमत कहीं खत्म हो गई है या कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, रिड्यूस कर दी है ऑपरेशन और बंद कर दिया है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जॉब सैलरी रखना और देना। दो ही ऑप्शन है, या तो उन कंपनीज को रिक्वेस्ट की जाए कि आप सैलरी, मैंने अभी सजेस्ट किया है सियालकोट में किसी फैमिली ओन एक्सपोर्टर है बहुत बड़े, मैंने कहा 2 चीजें आप कर सकते हैं। मेरी राय में किसी को फारिग नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म चीज है। जैसे मैंने कहा, दिस इज टाइम बाउंड, ये गुजर जाएगा। उसके बाद फिर जब अच्छा वक्त आएगा तो आज आपका एम्प्लॉय जो है वो आपका बहुत लॉयल एम्प्लॉय, वो डेडिकेटेड होगा, बिकॉज आपने मुश्किल वक्त में उसको होल्ड किया। आई अंडरस्टैंड अगर आपका कैश फ्लो का इशू है तो हम इस वक्त उसको रिड्यूस सैलरी पे डाल सकते हैं कि भाई जब तक काम नहीं है हम एक सर्टेन रिडक्शन लेके आते हैं जो मैनेजेबल हो, थोड़ा लॉस वो बर्दाश्त करें अपनी प्रॉफिट से, रिसीट में, और थोड़ा यहाँ। दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी को अगर डिटेल में बात करनी हो वो हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेफर्ड्स कर सकते हैं सैलरी। तो अभी हम अगर जैसे थोड़ी सी देते तो उनको कहते कट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये डेफर कर रहे हैं और हम एक टाइम फ्रेम देंगे कि इंशाल्लाह वंस द थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो कंपनी विल ओ यू दिस। तो बेसिक एक बात याद रखिएगा कि अभी एक्सपेंसेस सबके बहुत कम हो जाएंगे, जो हम उससे पहले थे ना, मार्च के पहले वाले, वो एक्सपेंसेस नहीं होंगे। आपको कर्टेल करने पड़ेंगे अपने एक्सपेंसेस। और वी हैव टू टेक ए रिव्यू ऑफ ऑल द एक्सपेंस आइटम, और उसमें से ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हैं जो एसेंशियल नहीं है। तो एसेंशियल सैलरी पे अगर हम आए तो मे बी 30-40% की सैलरी पे बंदा भूखा नहीं मरेगा बच्चों का, और वो चीजें दे पाएंगे, बाकी एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड द सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, we need to improve our employability। हमारा ये जो एक माइंडसेट है ना कि मैं एक काम करता आ रहा हूँ उसमें मैं फिक्स हो गया हूँ और यही मेरी मुलाजमत है, और वो पक्की नौकरी का जो कॉन्सेप्ट जो सरकारी इदारों से कल्चर हम लेते हैं कि ये हमारे रिटायरमेंट पर ही खत्म होगी, वो जमाना खत्म हो गया। वी हैव टू बी वेरी एजाइल, कीप ऑन चेंजिंग, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, और कीप ऑन increasing our employability to the new organization, new न्यू। मैंने बात की एंड आई एम रिपीटिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड इज एन ऑप्शन। कौन है जो जाके उबर की गाड़ी नहीं चला सकता, कौन है जो जाके अपनी चीजें मजबूरी में नहीं कर सकता है? देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर आर पॉइंट की को माइंडसेट से हम नहीं निकलते कि नौकरी हमारी उसे। तो व्हाइल वी कंटिन्यू टू होल्ड आवर एम्प्लॉयमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल, नॉट अटैच्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। हम उसके साथ चिमट नहीं जाए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जाने नहीं देगी। जॉब सिक्योरिटी में याद रखिए, कोई एम्प्लॉयर अपने अच्छे एम्प्लॉय को जाने नहीं देता है। तो एक तो मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बढ़ा के हैव टू मेक माई सेल्फ मोर वैल्यूबल। अगर मैं ज्यादा वैल्यूबल कर लेता हूँ मुझे नहीं छोड़ेगा मेरा एम्प्लॉयर, बुरे वक्त में भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, मैं अपने आप को स्किल्स को ब्रॉडन करूं। अच्छा, स्किल ब्रॉडनिंग के लिए ये मुस्तफा कि अब हमको कहीं बहुत ज्यादा टेक्निकल, ऑनलाइन फ्री के प्रोग्राम्स है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, ब्रॉडनिंग द स्किल पे, ऑनलाइन आपको डिजिटल प्रोग्राम है। वन ग्रेट बेनिफिट दैट हिस्ट्री विल रिमेंबर, ये याद रखिएगा, कोरोना की, कि वो जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है ना मुस्तफा, हम लोग कॉन्फ्रेंसेस में बात करते थे डिजिटाइजेशन आ जी गया, ये एआई जी। आ गया, ये वो कोरोना ने 10 साल एडवांस कर दिया। माइनस करोड़ नहीं थी जो
आई थिंक जफर साहब की कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है। डिजिटलाइजेशन आम आदमी आपका यहाँ पे बैठे हुए 50-60 पीपल जिनके जहन में भी नहीं होता कि एक कनेक्टिविटी इसमें थैंक यू। जफर साहब आपने बड़ी अच्छी बहुत अच्छी सजेशंस दी। मेरा ख्याल है मैं अपने ऑफिस की अगर बताऊं तो जहां हमने 50% लोगों को ऑल्टरनेट डेज पे काम पे लगाया है, वहां लोगों को हमने ये इनकरेज किया है कि वो ऑल्टरनेट दूसरे का काम करना सीखें। एक उससे जो वो काम रूटीन में कर रहा था अब उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है। दूसरा, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिसमें इस वक्त ट्यूशंस की बड़ी जरूरत है। आप अपने आप को जरा स्टूडेंट लाइफ में वापस ले जाए ना, जैसे उस्मानी ने कहा कि उबर है, ट्यूशंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वॉलंटियर, पेड वॉलंटियर्स चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स देख के आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऑल्टरनेट जरूर मिल जाएंगे। जी एग्रीड। और इट्स अ टाइम फॉर प्लानिंग, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। और उसमें मैं गुलाम मुस्तफा शेख साहब की जो सजेशन है उस पर मैं आई वुड सजेस्ट के ऑन HR Legend forum, I think HR Legend team should look into the online opportunities, different verticals की training की, whether it is a technology or non-technology, and do share with your network and have people access to the resources क्योंकि not everybody is enable to reach out to those resources. Since we are sitting in this environment, and HR Legend has been supporting in the past also, I think we should look into it and we should consolidate a list at time to time and start sharing all these participants if they can drop their email addresses, and then that can go forward further to their networks, their friends and families. So improvise करेंगे चीजों को, innovate करेंगे तो opportunities और भी निकलेंगी, because human has to survive. To survive for a human, they have to improvise, they have to innovate, and take this opportunity on a positive perspective. If we all are healthy and we all, our families are healthy, and this storm passed, that's the first thing. And then second thing is that let's see what else one can do. और उसके लिए जो हमारे resources हैं, we would be more than happy to share with you guys whatever the information we get it. And I think we should offside of this meeting we should talk on that and trying to see how we can support people in getting new opportunities. सर एक चीज मैं आपको अपडेट कर दूं, बाकी सब लोगों को भी जो लोग सुन रहे हैं, on this coming Saturday and Sunday we have 2 trainings lined up. This is free training, HR for non-HR managers. I mean there are lots of people who are managers but they do not understand the importance and the effectiveness of HR management. तो हमने ये 2 फ्री ट्रेनिंग्स हमने लाइन अप की हैं। उसके बाद हमारी कुछ और ट्रेनिंग्स के ऊपर वर्किंग हो रही है जो इंशाल्लाह हम लोग ये पूरा अप्रैल का जो एंड तक हम लोग वो सारी ट्रेनिंग्स रखेंगे। इवन के रमजान में भी हमारी ट्रेनिंग जारी होंगी और उसके लिए बहुत सारे ट्रेनर्स ने हमें कहा भी है कि दे कैन volunteer for free trainings and we just need to arrange the trainings and that is why I purchased license of GoToMeeting and also मैंने Zoom का भी लाइसेंस परचेज किया, उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज करेंगे। सेकेंडली हम लोग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह जून और जुलाई के महीने में। फॉर द फर्स्ट टाइम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में हम लोग प्लान कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और लास्ट ईयर हमारी जुलाई में HR टेक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 के अंदर। इस साल हम लोग वही सेम कॉन्फ्रेंस वर्चुअल करेंगे। इट विल हैपन, इट विल फॉर 2 days and it will cover broader you can say canvas, like we will be having panel members and also keynote speakers from different countries, different regions, different continents as well. So thank you very much for highlighting this. Or we are also working on e-learning environment for on the platform HR Legends as well. Very soon हम लोग उसको भी अनाउंस कर देंगे जिसमें आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर अपना कोर्स पिक करें, उसको अटेंड करें और उसकी इमीडिएट सर्टिफिकेशन ले लें। दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू डू थिंग्स इन कमिंग डेज। एंड ऑल्सो वेरी सून हम लोग और भी इसी तरह के जो पैनल डिस्कशंस हैं, लाइक एक हमारा जो हम लोगों ने प्लान की हुई है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन कोविड सिचुएशन। क्योंकि स्ट्रेस जो है ना घरों पे रह के लोगों को बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको स्ट्रेस को घर पे रहकर कैसे मैनेज करना है। अब पाकिस्तान में तो लकीली ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन
यूरोप और अमेरिका और ब्रिटिश कंट्रीज में, इन कंट्रीज में होम वायलेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा है, ये पाकिस्तान में नहीं है। वहां पर एक्चुअली लोग एक दूसरे पाकिस्तान को में मारते हैं, यार, हम सब बेगमात से डरते हैं। तो डर के फायदे में रहता है ना सर। उधर तो बेगम उठ पड़ती है, इधर तो फिर भी इज्जत करती है, उधर तो वो उठा बहुत लेती है। चाइना ये में बहुत जो है, डिवोर्स। अब तो बाहर जाएं तो बाहर से भी पढ़ेंगी ना। हाँ जी। और एक तो आपको ये घर भी से है भी कि पढ़ेंगी। हॉस्पिटल्स का बिजनेस सर इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर जो है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। ये भी एक एक्सपेक्टेशन जो है हमें। 7%। Salam Musbah. जी Let's go to the next question, if there is any. Let's Yeah, stick to the let's wrap subject. up. We see a आई lot of थिंक participants. Otherwise, wrap up. Yes. जी Yeah. जी लेट्स क्लोज Better द to wrap सेशन up. बिकॉज Yeah. we do not have any further question. So I am thankful to all the I just want to esteemed add one panel thing. members. Mustafa, sir. I just want to add one thing. This is Alhamdulillah a very successful start. This is not the end Yeah. of these interactions. Let's keep Yeah. it periodically over a week or 2 weeks, and let's bring up, everybody together. I think it was a very, very good interaction today. So let's continue. Let's use it as a जी ongoing. Good. ट्वाइस अ Thank वीक you. हमारे सेशंस प्लान होंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी हाँ, मच। मुस्तफा Thank you, everybody. Thank you. जफर जी साहब जी की जस्ट क्विक वन। Thank you जी, nice to see you all. जफर साहब की जो है उससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि सिचुएशन जो है इन कमिंग वीक्स चेंज होगी और इट विल गिव अस मोर फूड फॉर थॉट कि हम लोगों ने किस तरह सिचुएशन हैंडल करना है। एक्सपीरियंसेस सामने आएंगे। वी शुड कीप अप दीज सेशंस मे बी once a week or once a fortnight at least इसको रिपीट करना चाहिए। Thank you. Hopefully food के साथ कॉफी भी मिलेगी ताहिर साहब। Thank you. You are most welcome. If we can offer online coffee, yes, we will be able to do it. Thank you. Thank you. थैंक यू अब जी, ये थैंक देखें ना, That हाई would टी be a का digital खर्चा बच copy. गया मुस्तफा साहब आपका। ऑनलाइन का हाँ ये जी। फायदा हुआ है कि हाई टी नहीं करनी पड़ी अब आपको। सर मैंने तो लाइसेंस बाय किया, मेरा तो खर्चा हुआ है सर। अगर आई ये माने- मिला पेड के $200। तो 10-15 हजार रुपए तो निकल जाते, कहीं नहीं 60 लोगों को Right. चाय पिलाने। Thank you. Everyone, Thank you, very everybody. much for Thank you, मेरा Mustafa. खर्चा हुआ है your input. आपको सुने, मेरा दर्द तो सुन नहीं Thank you, रहा कोई। Mustafa, for मेरा सर and खर्चा organizing हो ही this. चुका है, $200 मैंने लाइसेंस पे स्पेंड कर दिए हैं टू अरेंज दिस Thank you. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक Bless यू you. See, that's the beauty of that's the beauty कि your cost of doing business is going to go down. जी जी। Khuda Hafiz, everyone. Okay, Allah thank you very much. Allah Hafiz जी। Allah Hafiz, everyone. अल्लाह हाफिज़। Thank you to the participants. चलिए। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू, थैंक यू। मुस्तफा भाई बहुत अच्छी एफर्ट किया माशाल्लाह आपने आज। थैंक यू चौहान साहब, बहुत शुक्रिया जी वेलकम जी। Thank you, Ghulam. Thanks a lot. Thanks for your efforts, and I really appreciate that. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऐसा ऐसा सब लोग जा रहे हैं। Yeah, 16 रह गए तुम्हारे 60 से। हाँ जी। नहीं हमने 100 क्रॉस किया सर, लोग आ रहे थे जा रहे थे I know. और No, but ओवरऑल this was good. अटेंडेंस नहीं है, चलो तो मेरे पास इंशाल्लाह अभी रिपोर्ट भी आ जाएगी इंशाल्लाह इसकी। I'll also leave then. We'll catch up inshallah. Okay. Khuda Hafiz. थैंक यू सर, थैंक यू सर।